Purchasing Managers Index. It is an indicator, number one, it is an indicator of business activity for both manufacturing and service sector. Number two, a score above 15 denotes expansion in business activity, and below 50 denotes contraction. Number three, Purchasing Manager Index, PMI, Purchasing Managers Index is compiled by RBI. Options 1 only, 2 and 3, 1 and 2, 1, 2 and 3. देखिए ये काफी न्यूज में रहा है इस साल, इंडियन एक्सप्रेस पे काफी आर्टिकल आए थे इस पे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। और S&P 500 है एक ग्लोबल, हमारे पास एक कंपनी है S&P ग्लोबल कहते हैं उसको, उनका एक इंडेक्स भी आता है S&P 500। तो व्हाट इज S&P? S&P ग्लोबल इज अ कंपनी जो जिनके अंडर दे हैव क्रिएटेड दिस IHS market. They have created this IHS market. This IHS market comes under S&P Global. ये इंडिया का एजेंसी नहीं है, एक इंटरनेशनल कंपनी है। IHS market इसके अंडर आता है, and IHS market comes up with PMI, ठीक है, Purchasing Managers Index। इसमें क्या करता है, IHS market जो है दुनिया भर में, for the entire world, they come up with this data. They actually go for the survey करते हैं for the biggest 400 and 500 companies in the world, जिसमें इंडिया की भी काफी सारी कंपनी, and basically they want to take the survey whether or not the economy is growing या economy is in contract. अब उसके लिए how would you get an idea whether the economy is growing or economy is in contract? By taking clues from the production that is happening. अब प्रोडक्शन में आपको बेसिकली 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग है, या फिर आपका सर्विस सेक्टर है। अब एग्रीकल्चर इंडिया का ऑलरेडी काफी अनऑर्गेनाइज्ड है। देयर इज नो फन ऑफ फाइंडिंग दीज बिग कंपनीज इन एग्रीकल्चर, बिकॉज एग्रीकल्चर हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है बेसिकली। सो लीविंग एग्रीकल्चर असाइड, वी हैव 2 सेक्टर्स दैट आर लेफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। तो वेदर और नॉट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, टू गेट एन आइडिया अबाउट दैट, for specifically for manufacturing and specifically for services, you come up with this Purchasing Managers Index. तो Purchasing Manager Index PMI पहले इंडस्ट्रीज के लिए निकाला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, देन वो निकाला जाता है सर्विस सेक्टर के लिए, एंड देन कंबाइनिंग द टू वी कैलकुलेट द PMI ऑफ इंडिया। तो PMI ऑफ इंडिया वुड बी इक्वल टू द परफॉर्मेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज, मिलाकर कंपोजिट इंडेक्स है। पहले तो सेपरेटली हम निकालेंगे, उसके बाद कंपोजिट निकालेंगे, दोनों का मिला। अब इसमें एक चीज तो क्लियर है, इट इज कैलकुलेटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट। तो बचा आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए, जब आप PMI निकालते हो, इसमें द वैल्यू दैट यू कैन गेट इज 0 to 100। द वैल्यू दैट you'll get is between 0 to 100। और अगर एक कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल इफ इंडिया का अगर PMI, इफ इंडियाज PMI इज 50, इसका ये मतलब है दैट प्रोडक्शन कंपेयर टू लास्ट मंथ और लास्ट ईयर इज नॉट चेंजिंग। दैट मींस प्रोडक्शन जितना है उतना ही है, प्रोडक्शन इज नॉट चेंजिंग। तो हम इसको बोलते हैं 50, यानी ये मीडियन प्रोडक्शन है, इन द सेंस दैट प्रोडक्शन अगर लास्ट ईयर 100 था, आज भी 100 ही है, इट्स नॉट चेंजिंग। But if the value of PMI is more than 50, that means production is rising. तो उसको हम expansion बोलेंगे. If value of PMI is less than 50, that means production is contracting. उसको contraction बोलेंगे. So that is what they have written here. A score above 50 denotes expansion. Below 50 denotes contraction. So second statement is also correct. So answer is 1. And PMI is a survey-based measure that asks the respondents about changes in key business variables in comparison to previous month. तो ये monthly basis हर महीने आता है। The purpose of PMI is to provide information about current and future business conditions to company decision makers, analysts and investors. Next point, it is calculated separately for manufacturing and service sector, and then a composite index is also constructed. PMI is a number from 0 to 100
PMI is a number from 0 to 100. Value above 50 means expansion, below 50 means contraction, at 50 indicates no change. It is released every month and is compiled by IHS Market. IHS Market for more than 40 economies worldwide. IHS Market is a part of S&P Global. This is your PMI.